الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. He has let loose the two seas meeting together. Between them is a barrier which none of them can transgress. Then which of the blessings of your Lord will you both jinns and men deny? Out of them both come out, pearl and coral. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? And his are the ships going and coming in the seas like mountains. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? Whatsoever is on the earth will perish, and the face of your Lord, full of majesty and honor, will abide forever. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Jazakallah. Ladies and gentlemen, national anthem is the pride and dignity for every independent nation. I request you all to please stand alert in the honor of national anthem. قوة
I'm your host, Abdul Kareem. And I am Tamsil Munir. And we welcome you all to the most awaited, most spectacular, and most entertaining event of Berha University, the BU Carnival. This 3-day event not only gets us a break from our hectic schedule, but also helps us recharge ourselves, make new friends, and discover, polish, and portray our skills. Let's turn back time and look at the 3-day event we wait all semester for. Ladies and gentlemen, presenting to you a glimpse of colors of Pakistan. हम इस बहाने ये खेल फिर जमेगा और स्टेज फिर से सजेगा, फिर दिल से सीटी बजेगी और जहाँ से नारा लगेगा। ये तुम न जाने हम करेंगे वो दिल जिसको माने, हर तारा है हमारा, हर सपना है हमको प्यारा, हमको तुम अब न रोको, जो चाहे दिल वो करे। खेल खेल में हम सारों के मेल मेल में यादें कई रह जाएंगी, कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा, खुद को खुद ही में मिला दे, फिर दिल से जा लगा दे। Berha University produces wonderful artists, directors, filmmakers, and photographers. To acknowledge their hours of hard work and commitment, we now present the best short film in the competition.
मॉम, आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है। ओह, इसका मतलब हमें आज आपके स्कूल भी जाना पड़ेगा। चले, जैसे ही आपके पापा उठते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। मॉम, आप हर बार इसी तरह कहती हैं, अगर पापा नहीं आते तो आप तो आना। नहीं बेटा, इस बार हम ज़रूर रहेंगे। अब जैसे ही स्कूल पहुँचते हैं हम आपके स्कूल पहुँचेंगे, ठीक है? चलो शाबाश, अब देर हो रही है। गुड बाय मॉम। गुड बाय बेटा। जी, तो ये था हमारा आज के लेसन। इंटरेस्टिंग था ना? चलें, जल्दी से ओपन अप योर होमवर्क, ठीक है? गिव मी योर कॉपी फॉर मी। वेरी नाइस, गुड बॉय। वेयर इज योर होमवर्क, अहमद? अरे ये क्या अहमद, आज आपने फिर काम नहीं किया? सॉरी मैम। सॉरी का कोई मतलब नहीं है। आप सोहेल को देखें, वो डेली होमवर्क करके लाते हैं, आप क्यों नहीं करते? मैम, सोहेल के पापा उसको होमवर्क करवा देते हैं, लेकिन मेरे पापा के पास टाइम नहीं होता। जी सर, हम आपका काम बड़ी जल्दी मुकम्मल कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक करना पड़े। जी, आपका चेक अभी तक नहीं पहुंचा। जी जी जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मॉम, आप हर बार इसी तरह कहती हैं, अगर पापा नहीं आते तो आप तो आना। नहीं बेटा, इस बार ज़रूर रहेंगे। अब जैसे ही स्कूल पहुँचते हैं हम आपके स्कूल पहुँचेंगे, ठीक है? बच्चे आप क्यों उदास बैठे हैं? जो लोग खुश रहते हैं वो लंबी उम्र पाते हैं। आपको पता है कि मेरे दादा की उम्र 106 साल थी। क्या वो खुश रहते थे? नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। ये प्रोजेक्ट हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है और इसके लिए हमें बड़ी लगन और मेहनत से काम करना होगा। जो शख्स वक्त की कदर और कीमत को समझता है, वक्त इसको साथ लेके चलता है, और जो इसकी कदर और कीमत को नज़रअंदाज कर देता है, वक्त इसको नज़रअंदाज कर देता है। जी, वो मैंने आपको बताया था ना, आज अहमद के स्कूल में पेरेंट्स डे है। आई एम रियली सॉरी, मेरा आज एक इंटरव्यू है। तो वो डिले नहीं हो सकता? नहीं, वो डिले नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइव ऑन एयर होना है। पिछली बार भी आप मुल्क से बाहर थे, आप उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या मतलब? ये सब कुछ अहमद की खुशी के लिए तो मैं कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक करता हूँ, ये सारा पैसा उसी के लिए तो है। तो क्या पैसा ही सब कुछ दिला सकता है? ओके, अल्लाह हाफिज। Guys, the meeting is over for today. Thank you for your time. I have an interview in the afternoon. Have a nice day. जी रेडी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट आबिद बशीर। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कम अरसा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद अमीन। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। आज हम आपसे आपके बिज़नेस में आमद और तरक्की के वो राज जानना चाहेंगे जिन्होंने आपको बिज़नेस टाइकन बना दिया। Thank you for your comments and for inviting me in your show. देखें जी, मेरी ज़िंदगी और बिज़नेस के बारे में एक नुक्ता नज़र कि टाइम इज़ मनी। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा वक्त देते हैं वो इस कदर ही आपकी हो जाती है। खालिद साहब, क्या आप ये नहीं समझते
कि आप ज़िंदगी को एक बिजनेसमैन की तरह देख रहे हैं, हालांकि ज़िंदगी मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात का नाम है। मेरे मुताबिक जिस शख्स के पास दौलत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जज्बात और एहसासात बेमायनी हैं। दौलत से आप हर आशाइश और हर सहूलत ख़रीद सकते हैं, जबकि इसके बगैर सिर्फ दुख और परेशानियाँ हैं। मैं 1 घंटे का 5,000 चार्ज करता हूँ, चाहे जो भी हो। चलो बेटा, बहुत रात हो गई, आपके पापा लेट आएंगे, अब जाके सो जाओ। कैसे था मेरा इंटरव्यू? जी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बेटा आप अभी तक सोए नहीं? पापा, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं। आप इन पैसों में मुझे जितना टाइम दे सकते हैं दे दें, प्लीज़। Please give a big hand to this award-winning short film which was created by Suhaib Ehsan Nazir from MS Media Studies. And now, ladies and gentlemen, it's time to announce the best photographs of the year. The third one is from Babar Media Studies. The second prize goes to Tariq Khatak. Ladies and gentlemen, the first prize goes to Hamad. So, presenting to you this year's Voice of Behriya Season 4. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kurutalan Aisha from Software Engineering. Assalamu alaikum, guys. I recently won Voice of Behriya Season 4 and I'm going to perform Soni Dharti Allah Rakhe. कीज पर हमारे साथ निहाल हैं और आहिद प्ले कर रहे हैं साथ हमारे। ओके, तो आप भी मेरे साथ मिलके गाना लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। ओके ओके सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम
Thank you so much. जुनून और इश्क से मिलती है आज़ादी. Ladies and gentlemen, presenting to you instrumental performance by our very own band, Melange. Now it is time to acknowledge the efforts of Behra University students, making us proud all over the world. Ladies and gentlemen, we'll begin with the events at Sports Club. Behra University was winner at Twin City Basketball Competition. Winner at HEC Basketball Zone C. Winner at ICRA Tactics 2018. Ladies and gentlemen, I will be needing your support. Please give it up. Volleyball winner at APCOM Sports Fest. Volleyball winner against ComSats BU Pink Ribbon. Volleyball winner at ICRA Tactics 18. Volleyball runner-up at BNU Festival 2018. Now it's time to announce the awards Behra University got. For Arts and Dramatics Club. The runner-ups for UNDP Mountain Day Drama Competition. The runner-ups for BNU Drama Fest. The Best Female Actor and Best Supporting Male Role in GIK Drama Fest 2018. The second runner-ups for Quaid-e-Azam University Drama Fest. Now, coming to the Literary and Debates Club. The 3 outstanding diplomatic and 3 honorary mentions for GIK Model United Nations. The winner of English Explorers from All Pakistan Air University Bilingual Declamation Competition. The runner-ups for Urdu Declamation in Army Burn Hall School. The journalism winner for Festival 2018 Lahore. Okay. I don't see the teachers very happy. They're not clapping. Okay. And now it's time to announce the Community Support Program Awards. Community Support Program collaborated with Business Incubation Center, BUIC, and won second prize in this competition. The competition was Clean and Green Islamabad Ideas, organized by Ministry of Interior, Pakistan. Coming to the Business Incubation Center, Asan Ticket by Qasim Ali Shah and Arif Hussain. The award was for Asan Ticket, a setup for Business Incubation Center. Behra University Islamabad has secured a grant for 2.6 million from USAID and Small Medium Enterprises Activity. Okay, and the next award is for Medino secured a seed grant of rupees 5 million from Center of Social Entrepreneurship at the Ministry of Planning, Development and Reforms, Pakistan. And now the last one. Blood Care secured a seed grant of rupees 5 million from the Center of Social Entrepreneurship at the Ministry of Planning, Development and Reforms, Pakistan. Ladies and gentlemen, thank you very much. These were the efforts and hardships students of Behra University, along with the support of their faculty, the teachers, have done this so far. These were the winners and the award winners of 2018.
And now I would request our pro-rector to please come over the stage, and we would like to distribute the awards, awards and certificates. I also invite the DIC to please come, Director Islamabad Campus to please come over the stage, along with the HOD. And the first one is Miss Amina Fahim from Management Sciences. Mr. Tanveer Elahi from Management Sciences. Mr. Khwaja from Computer Science. Mr. Bilal Mukhtar from Computer Science. Ms. Tuba Shakur from HNSS. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ms. Tuba Shakur. Now it's time to announce the winners of declamation contest. First prize goes to Mr. Mustafa from Media Studies. The second prize goes to Saad Chandana, Media Studies. Now the third prize goes to Lareeb Javed from Earth and Environmental Sciences. Now for photography. The third prize goes to Babar Kayani from Media Studies. The second prize goes to Tariq Khatak from BSIT. And the first prize goes to Hamad Yaqub from BSCS. Now it's time to announce the winners of Naat competition. Third prize goes to Gul Mahad from Management Sciences. Second prize goes to Muhammad Dawood from Earth and Environmental Sciences. The first prize goes to Raisul Islam from Management Sciences. And now the Kirat competition. Third prize goes to Fatima Ismail from Computer Engineering. Second prize goes to Amna Manzoor from Management Sciences. Ladies and gentlemen, the winner of Kirat competition is Hafiz Muhammad Taki from Earth and Environmental Sciences. It is time for the winners of drama competition. The third prize goes to Management Sciences. The second prize goes to Electrical Engineering. The first position goes to Media Studies. Winners of Badbazi competition. Third position goes to Arsalan Ahmed and Hasib from ENES department. Second position goes to Zain Rana and Rimsha from Media Studies department.
First position goes to Abdullah from Earth and Environmental Sciences Department. Ladies and gentlemen, put your hands together for this year's Voice of Bahria, Kurtulan Aisha. Sports events, volleyball male. Runner-up award is to Management Sciences. And the winner award goes to Engineering Department. The winner of chess is Hassan Ali from Computer Sciences. Badminton female double, runner-up is Uniza Warda, and the winners are Maryam and Mehrunisa. Badminton mixed double, the runner-ups are Talha and Warda, and the winners are Maryam and Hassan. For badminton male single, the runner-up is Talha Zubair, and the winner is Ahmed Hayat. Now the time has come to announce and thank the backbone of Bahria University Carnivore of all times, the people who channelize our ideas into reality, who spend endless hours to make our event possible, and who are involved equally and equally triumph in our success. Please welcome the production team of Media House, Kamran Saeed. Mirza Imran, who is not here right now. Moving on, Adil Akhtar. The Iron Man of Bahria University, who binds us all as Avengers. Ladies and gentlemen, please welcome our favorite, Ehsan Mahmood. The idol of Media House, the mentor of young minds, the jury member of Dramasha and focal person for Naat and Kirat competition. Very humble, very polite. No word can justify his personality. My inspiration, my teacher. Ladies and gentlemen, please welcome Sanadeen. Next up is jury member of Dramasha and Kirat competition. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ms. Tahreem. Mr. Adil Hashmi, Student Support Center. Next up is Mamta Binder, the energy source behind us all. Next up is Sir Farooq Shehzad. Now I request the Pro-Rector and DIC to present a shield to our HOD, Head of Department of Media Studies, Dr. Siraj. He is the umbrella of our department. The BU Carnival has come to an end, ladies and gentlemen. Thank you so very much for your support.